Hello, this is Ruby Parekh from Chocolatey Cakes Cooking and Baking Classes. First, let me introduce myself. We conduct approx 60 different kind of courses in online and offline in Vadodara, Gujarat. For all courses details, you can check description box where we have given one link, that is our Facebook group link, जहाँ पे हमारे सारे कोर्सेज की डिटेल्स आपको देखने को मिलेंगे. एंड नाउ today we are going to make a unique dessert, a fusion dessert actually, that is an eggless recipe, no bake motichur cheesecake. And for that, what ingredients we need, I'll just show you. This is Mary biscuit, that is 100 gram Mary biscuit, and 2 tablespoon unsalted butter, then 1 tablespoon powdered sugar along with 1/4 teaspoon cardamom powder. Then here we have motichur laddu, and motichur laddu को हमने यहाँ क्रम किया है, that is for center filling and top garnishing. And then these are the ingredients for cream cheese layer. Here we have taken 1 cup whipping cream and 200 gram cream cheese. That you can take Delecta का cream cheese, Golaka का cream cheese, or you can take Dairy Craft का cream cheese. Any cream cheese you can take, or you can take Philadelphia cheese as well. And यहाँ पे हमने लिया है powdered sugar, that is 50 gram, and 1/4 teaspoon हमने cardamom powder लिया है, that is for flavor. And flavor के लिए आप यहाँ पे ½ teaspoon मावा essence also add कर सकते हैं, that is completely optional. And यहाँ पे फिर हमने लिया है 100 gram white chocolate and 50 gram Amul fresh cream. We are not going to use any kind of like agar-agar, gelatin or setting agents. All are like healthy. It is on a healthy concept. And now we are going to start the recipe. यहाँ पे मैंने मैरी बिस्किट मिक्सर जार में लिए हैं. You can take in 2 batches. Just break it and you can take in 2 batches as well if you wish to. So यहाँ पे हमने बिस्किट लिया है, इसे हमें क्रश करना है. और क्रश करने के बाद आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो क्रश करना है दैट इज कोर्स ग्राइंड. यदि आपने इसको फुल्ली ग्राइंड कर दिया, एकदम फाइन पाउडर कर दिया, तो जो आपके चीज केक का क्रस्ट है इट विल बिकम स्टोन हार्ड. एंड जब आप चीज केक कट करेंगे वो बिस्किट का लेयर आपसे कट नहीं हो पाएगा. बट इफ यू विल क्रश इट कोर्स ग्राइंड, लाइक इफ यू ग्राइंड इट कोर्सली, देन आपका जो क्रस्ट बनेगा दैट इज लाइक इट इज वेरी इजी टू कट एंड इट इज सॉफ्ट एज वेल. सो जस्ट ग्राइंड इट कोर्स. ये हमारा बिस्किट कोर्स ग्राइंड हो गया है. नाउ वी आर गोइंग टू ऐड मेल्टेड बटर इन इट. मेल्टेड बटर हम इसमें डाल देंगे एंड इसी के साथ हम शुगर एंड इलायची पाउडर इसके अंदर डाल देंगे. देन मिक्स इट वेल, और यू कैन गिव 1 राउंड ऑल्सो लाइक इन मिक्सर. जस्ट 1 pulse you give, so butter will mix properly. Just that's it. Now here you have to check the consistency of biscuit. If it is binding, like if you pick it in hand and if it is binding, then it is the perfect crust for cheesecake base. But if it is crumbly, then need to add little bit more butter. So that way you can judge the recipe. So here I have added little more butter to make a good crust. Now we put this crust in container, loose bottom container. And just press it with a glass or anything to make a nice crust. Press it properly. See, now crust is completely set. You can see it is not moving at all. And now we are going to put this in deep freezer at least for 15 minutes to half an hour. So I am going to put this
in deep freezer for at least 15 minutes to half an hour. एंड अभी हमारा फ्रीजर में क्रस्ट सेट हो रहा है, तब तक हम सेंटर लेयर क्रीम चीज बना लेते हैं, जिसके लिए मेरे पास व्हिपिंग क्रीम है. उसको हमें व्हिप करना है ऑन हाई स्पीड टिल बिकम स्टिफ पीक्स इन वन डायरेक्शन ओनली, लाइक दिस. सी हमारे स्टिफ पीक्स आ चुके हैं. यू कैन सी द पीक्स. इट इज स्टिफ पीक्स इज डन. नाउ वी आर गोइंग टू ऐड क्रीम चीज. इसमें हम क्रीम चीज ऐड कर देंगे along with powdered sugar and cardamom. Then we will beat it again. It is done now. And now for setting the cheesecake, we are going to melt the chocolate along with the fresh cream. Chocolate and fresh cream both we are putting in a bowl. And अब हम इसको माइक्रोवेव करेंगे 30 सेकेंड के लिए. ये हमारा हमने 30 सेकेंड के लिए माइक्रोवेव किया है क्रीम एंड व्हाइट चॉकलेट को. अब हम इसको अच्छे से विस्क कर रहे हैं चॉकलेट मेल्ट होने तक अच्छे से और इसमें मिक्स होने तक. एंड देन वी विल ऐड दिस मिक्सचर इन आवर क्रीम चीज मिक्सचर and it will give very good flavor to our cheesecake. and इससे हमारा cheesecake बहुत जल्दी set भी हो जाएगा. and we don't need any like setting agents like gelatin, agar or anything. so just mix it well. if you feel कि आपका chocolate अच्छे से mix नहीं हुआ है तो you can heat it again for 10 second or 20 second in microwave. now we are adding this chocolate mixture in our whipping cream mixture or cream cheese mixture, and again mix it well. And I am adding 2-3 drops or little bit mawa essence in it to give Indian touch to this fusion dessert. This is done, and here I have one piping bag, and just fill this mixture in piping bag. Mix it well first and then fill this in piping bag. Now cut it from bottom, and now we will do the piping cheese cream cheese layer on biscuit crust. Now you can see our biscuit crust is set. You can see it is completely set. Now we are going to piping the cream cheese layer. पाइपिंग इज वेरी मस्ट. यदि आप डायरेक्टली उसको फिल करेंगे तो बाहर आपके आउटर साइड पे जब आप चीज केक डिमोल्ड करेंगे तो बहुत सारे एयर पॉकेट्स आ जाएंगे, एंड आपका फिनिशिंग जो है आउटर साइड चीज केक का वो आपको नहीं दिखेगा. सो मेक श्योर आउटर ऑलवेज शुड बी पाइपिंग. नाउ इफ आई वांट टू फिल मोतीचूर in layer, then I am filling motichur laddu here in center, not everywhere, in center only I am filling like this. You can see. Now again top with cream cheese layer. Now make it finished layer like with a spatula. Give
इसको हमको अच्छे से फिनिशिंग करना है, स्पेशली ऑन एजेस एंड ऑल। After finishing, again put motichur laddu on top. Motichur laddu on top. Just give spreading with light hand. And then put it in normal freeze, like lower compartment में ही आपको रखना है freeze के at least for 6 hours or overnight. Then I will show you how to demold the cake and how to slice it and serve it. 4 hours हो गए हैं और अभी हमारा चीज केक बिल्कुल अच्छे से फर्म हो गया है। Now we are going to demold the cheese cake like this. Just put the mold in on a glass and just remove the ring. इस तरह से आपको रिंग को रिमूव करना है। Just remove the ring and look at the cheesecake. It is beautifully came out. Look at the outer part. It is beautifully came out. And now just remove the bottom part with spatula like this, and you can see it is perfectly came out. Now we will cut the slice. Now we will cut the slice of cheesecake, and you can see it is very soft, and we can cut it easily. And look at the cheesecake from inside, and you can garnish the slice with whipped cream, mint and cherry. I'll just show you. Look at the inside of cheesecake. The filling is inside and it is looking delicious. Look at the cheesecake. If you like the recipe, then please like, share and subscribe our channel. Thank you.